हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का इंग्लिश। उसमें 1.1 देखेंगे, वॉक अ लिटिल फ्लावर। उसमें वार्मिंग अप में चिट चैट है, वो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। माय थॉट्स के क्वेश्चन देखेंगे और बुक में दिए गए जो क्वेश्चन है वो भी हम आंसर देख लेंगे। चिट चैट में है फ्रॉम पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ 4 यूज दिस क्वेश्चंस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर यू अ टॉकटिव पर्सन। यहाँ पे दो आंसर होते हैं, यस आई एम अ टॉकटिव पर्सन। दूसरा आंसर होगा नो आई एम नॉट अ टॉकटिव पर्सन। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू शेयर योर थॉट्स। उसका आंसर है यस आई लाइक टू शेयर माई थॉट। और इसमें दो पॉसिबिलिटी के आंसर हो सकते हैं, नो आई डोंट लाइक टू शेयर माई थॉट। ऐसे इसमें दो आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू आफ्टर 10th। उसका आंसर है आई वुड लाइक टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, ठीक है। अभी माई थॉट्स देखेंगे, फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 4 to 6 डिस्कस द फॉलोइंग with your friends in the group and then complete the sentences। यह हमें ग्रुप में डिस्कस करना है और सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो उसमें ए दिया गया है, आई वुड लाइक टू टॉक टू माई मदर अबाउट स्विमिंग लेसन। यह हमें बुक में आंसर दिया गया है एक। तो हमें बाकी के आंसर लिखने हैं, तो क्या आएंगे देखो। सेकंड नंबर का देखेंगे, आई वुड लाइक टू टॉक टू माई फादर अबाउट कंप्यूटर क्लासेस। आई वुड लाइक टू टॉक टू माई टीचर अबाउट माई स्टडीज़। आई वुड लाइक टू टॉक टू माई बेस्ट फ्रेंड अबाउट क्रिकेट मैच। आई वुड लाइक टू टॉक टू माई ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट फ्यूचर प्लान्स। आई वुड लाइक टू टॉक टू माई नेबर अबाउट अवर सोसाइटी। यह आंसर सबके अलग अलग आ सकते हैं, आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बी नंबर का, आई वुड लाइक टू लर्न टू स्विम फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड। आई वुड लाइक टू लर्न टू कुक फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। आई वुड लाइक टू लर्न टू ड्रॉ पिक्चर फ्रॉम माई टीचर। I would like to learn to ride bicycle from my neighbor. I would like to learn to play chess from my cousin। यह हमें बुक में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी नंबर, I hesitate to talk to my teacher about my studies। I hesitate to talk to my brother about the way she talk to my friends। I hesitate to talk to my father about what I would like to do in future। I hesitate to talk to my uncle about how I want to spend my holidays। I hesitate to talk to my elder brother about a favorite movies। I hesitate to talk to my sister about the thing I want to buy। ओके, अभी इसमें बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो देखेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द चाइल्ड ट्राइज टू वॉक फास्ट व्हाई। उसका आंसर देखो, इफ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट इट वुड फॉल बिकॉज it is too small to walk fast or to match the speed of its father। क्वेश्चन सेकंड है, does the word walk refer only to the act of walking? What does the poet actually mean to say? आंसर है no, the word walk does not only refer to the act of walking। The poet uses the word walk to refer to the action, decisions and way of living of a person। क्वेश्चन नंबर 3 है, what do the footsteps of the father refer to? आंसर देखो, the footsteps of the father refer here
to the father's mannerism, distinctive and individual gesture, traits of speaking and behaving, his action and his all other characteristics that makes a person successful in life. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट क्वालिटीज ऑफ योर पेरेंट्स एल्डर्स वुड यू लाइक टू अडॉप्ट। उसका आंसर देखो। देयर एबिलिटी, नोबल थॉट एंड एक्शन, काइंडनेस एंड लव फॉर अदर्स, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, प्रिजर्वेंस एंड टू रिमेन हैप्पी इन गुड और बैड कंडीशन। इंग्लिश वर्कशॉप में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रीड द पोएम अलोड। यह आपको खुद को रीड करनी है पोएम। और क्वेश्चन 2 दिया गया है, पुट द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द प्रॉपर ब्लैंक्स। इसमें ए है, द डैश इज टॉकिंग टू इट्स डैश। आंसर में आएगा द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर। बी है, द डैश इज लीडिंग एंड द डैश इज फॉलोइंग। आंसर में आएगा द फादर इज लीडिंग एंड द चाइल्ड इज फॉलोइंग। सी नंबर है, सम डे द डैश विल बिकम अ डैश। आंसर है सम डे द चाइल्ड विल बिकम अ फादर। डी है, द डैश डज नॉट विश टू फॉल व्हाइल फॉलोइंग इट्स डैश। आंसर में आएगा द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल व्हाइल फॉलोइंग इट्स फादर। क्वेश्चन 2 है, फाइंड एंड राइट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, वर्ड्स दैट अपीयर एट द एंड ऑफ द लाइन। इसका आंसर देखो। स्मॉल फॉल, सी मी, बी मी, ट्रू यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर शो दैट दे आर रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डैडी, फादर, चाइल्ड, फॉलो, लीड, ऐसे हमें पेयर देखने हैं। तो आंसर में आ जाएगा टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, गिव, टेक, ओनर, सर्वेंट, कम, गो, मदर, चाइल्ड, इजी, हार्ड। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द चाइल्ड इन द पोएम रिक्वेस्ट हिज फादर टू वॉक स्लोअर। हियर द पोएट implies that the child want to understand his father action better. The child would like to act the same way but wants to father to be more understanding towards the child's need. What is implied in the following line? देखो यहाँ पर ए लाइन दी गई है, समटाइम्स यूअर स्टेप आर फास्ट, तो उसका आंसर आ जाएगा इट इम्प्लाइड्स दैट द चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द फादर वांट्स टू टीच हिम। बी है, समटाइम्स यूअर स्टेप आर हार्ड टू सी। आंसर है इट मीन्स दैट द चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज फादर्स एक्शन। सी है, आई वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राइट। आंसर है whatever the child learn today it will teach its child the same. D है, and know that I was true. आंसर है the child will try to teach its child to learn slowly. It want to understand better and wisher to happen the same with its child. क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग योर ओन आइडियाज फ्रेम 3 सेंटेंसेज दैट शो कंटिन्यूअस एक्शन। एग्जाम्पल है यू आर लीडिंग मी। ये एग्जाम्पल के जैसे हमें और 3 एग्जाम्पल लिखने हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आएगा आंसर में, दे आर ईटिंग बनानाज। सेकेंड, दे आर वॉकिंग फास्ट। थर्ड, दे आर ड्राइंग पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग योर ओन आइडियाज फ्रेम at least 3 sentences that show future action or state.
एग्जाम्पल दिए गए हैं, हु विल वॉन्ट टू फॉलो मी। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है, व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप। तो ऐसे ही आंसर में हमें एग्जाम्पल लिखने हैं। आंसर में फर्स्ट एग्जाम्पल आएगा, व्हेन विल द स्कूल ओपन। सेकेंड, आई विल सी यू टुमारो। थर्ड, दे विल हेल्प अस। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट द समरी ऑफ योर डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स। उसमें ए है, हाउ आर सर्टन आइडियाज, कस्टम्स, नॉलेज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। आंसर, समरी ऑफ द डिस्कशन देखो, उसमें फर्स्ट पॉइंट है, थ्रू पेरेंटल टीचिंग। सेकेंड पॉइंट, ऑफ्टन द चिल्ड्रन फॉलोज द हैबिट एंड मैनर ऑफ देयर एल्डर्स। थर्ड पॉइंट, many ideas, customs and knowledge are transferred from one generation to the another generation by stories, books, media and from teaching. Question 7 में B है, it is necessary for children to follow the footsteps of their forefathers. If yes, why? Why is it sometimes necessary to change the old ways? आंसर देखो, इसके समरी ऑफ द डिस्कशन देखो, उसमें फर्स्ट पॉइंट है, येस इट इज़ नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू फॉलो द फुट स्टेप ऑफ देयर फोर फादर्स बिकॉज वन गेट टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। सेकेंड पॉइंट है, वन विल मेक द मिस्टेक्स विच देयर ओल्डर जनरेशन हैव मेड। थर्ड पॉइंट है, it is also necessary to change many views and ideas according to the change of society because custom and tradition change with the passage of time. Question 8 है, do you have a role model? What qualities do you appreciate in your role model? Answer है, yes, I have a role model. She is none another but my mother. She is hardworking, loving, smiling and cooperative. She never gives any chance to complain. I have always seen fulfilling all her responsibilities efficiently. She is always appreciated by others. Question 9 है, think of a occasion when you did not like the decision, action of your family members but realized later on that they were right. Write about it in 5 to 8 lines. Answer देखो, when I was in 8th class, my parents told me to join math tuition and follow a study timetable, but I didn't listen to them. I thought I could manage on my own. I didn't study properly and didn't go for tuition. In the exam, I got low marks. Then I understood my parents were right. I should have followed their advice. Question number 10 है, within 2 minutes write as many phrases or sentences as you can using a little. तो देखो, ये हमें एक टेबल दिया गया है, ऐसे ही हमें लिखने हैं। आंसर में आएगा, अ लिटिल हेल्प, अ लिटिल नर्वस, गिव मी अ लिटिल स्पेस, आई कॉस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा, अ लिटल इफर्ट, अ लिटल बाइट ऑफ लक, आई नीड अ लिटल मोर टाइम, ही सीम्स अ लिटल अपसेट, अ लिटल लेट, अ लिटल स्टोरी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन और आंसर्स ख़त्म होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी है, वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।